हाँ, हमारे पास अभी है मैकबुक एयर, जो कि इसका मॉडल नंबर देख सकते हो, A1466। तो इसका कीबोर्ड का इशू है, तो कीबोर्ड हम रिप्लेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव। तो बैटरी को रिमूव करेंगे पहले। हो गया बैटरी रिमूव। अभी इसको रिमूव करना पड़ेगा ब्रेकर, उसके बाद मोटर ब्रेकर। हो गया, हो गया। अब होगा ये वाला होना, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पर मैं करना इसको जैसे किया, लेकिन पर इसको करना पड़ेगा इसे कर दी है स्पीकर, ठीक है। स्पीकर को ऐसे दूर है, ये थोड़ा सा पड़ रहा है, अंदर से दूर है, ठीक है। हो गया। मदरबोर्ड को खोलने के लिए पहले हम एलवीडीएस को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये हो गया एलवीडीएस डिस्कनेक्ट। उसके बाद पर जो इशू है इसको खोलेंगे। मदरबोर्ड का इशू है ये, इसको खोलेंगे। शेडो आ रहा है यहाँ पर, लाइट का शेडो आ रहा है कैमरे पे। कोई नहीं, जैसा खोलेंगे। और भी है, ये कनेक्टर है, इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। और इसका रोड इंजन को खोलेंगे। इंजन भी डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसका रोटर बोर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे। फैन को खोलेंगे। फैन को ये रोटर बोर्ड को रिमूव करना होगा। फैन को डिस्कनेक्ट कर लो। फैन डिस्कनेक्ट कर दिया। रोबोट को डिस्कनेक्ट करें। है इसको खोलना पड़ेगा और इसको साइड कर देता हूँ। इसको मैंने देखा साइड पोस्ट करो थोड़ा सा ऑन कर दिया। अभी इसका वाईफाई कार्ड को डिस्कनेक्ट करना है। वाईफाई कार्ड को डिस्कनेक्ट करना है। वाईफाई कार्ड डिस्कनेक्ट कर दिया। इसको रख देते हैं यहाँ पर। और जो मदरबोर्ड है ओपन कर लेंगे।
और जो कनेक्टर है यहाँ पर एक है, इसको खोलने देते हैं, नीचे से जाएगा, नीचे इस कनेक्टर है, इसलिए आ गया हमारा पीछे, और यहाँ पर फोकस करो, वीडियो आ रहा है क्या? पोस्ट कर दो। चलो अभी हमारा काम है इसको सारा स्क्रू को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 करीब लगभग इसमें 50 से ज़्यादा स्क्रू है, 1 2 तुम पॉज कर दो, चौबीस और इशू है 40। तो मेरे पास यहाँ पर जो टूल्स होता है इसको रिमूव करने के लिए, एक्चुअल में ये हैंडल से होता है। तो अभी फ़िलहाल अर्जेंट बेसिस काम कर रहा था, तो ये टूल्स मेरा सेटअप पे था, ये मैं शॉप पे कर रहा था, इसलिए मैं ओपनर से धीरे धीरे कर रहा हूँ। करीब यहाँ पर 100 से ज़्यादा रिपीटर है, मतलब रिपीट है, जो आपको हैंडल से करना है धीरे धीरे करके। आप देखो इस तरह से भी कर सकते हो, पर नीचे डिस्प्ले है, बी केयरफुल, अगर डिस्प्ले में थोड़ा सा भी प्रेशर आए तो आपका डिस्प्ले डैमेज हो सकता है, और मैकबुक का डिस्प्ले बहुत ही महंगा आता है, ये सबको पता है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके ओपनर से एक एक जो रिपीट है उसको मैंने हटाया, क्योंकि ये मैं घर पे करता सेटअप पे, तो ऐसे नहीं करता, क्योंकि मेरे पास टूल्स है, हैंडल से ये हो जाता है, पर उसमें भी टाइम लगता है। पर ऐसे आप चाहो तो ओपनर लेके कर सकते हो। हमने इसको देखा है, जब पास से लगो तो वो वीडियो कर लिया, बस पास से एकदम 2 वीडियो करो, 1 मिनट बस हो जाएगा। ऐसा RGB की लाइट बोलेगा बोल दूँ, वो बैक लाइट लगी।
कीबोर्ड का हमारा आरजीबी का कनेक्टर हो गया, होल्ड ऑन। हो गया। अब इसको लगाना है और इस मदरबोर्ड को तो কম্পিউটার ভিডিও মডেল আছে এটা বোঝে तुम শেখাচ্ছি এর কাজের কাজ কর तुम আসো तुमको हम सिखा रहे हैं, तुम ही हमारा काम करो। ठीक है लो कर दिया इतना रोज लगता है मुझे सिखला दे उसको क्या ये बोल गया तो इंग्लिश पे डालते इंग्लिश लगा दिया। अब इनका पड़ जाएगा यहाँ पे कार्ड कौन सा स्पीकर पता नहीं वो ये बड़ा वाला हो गया। आरजीबी का कनेक्टर लगा रहा हूँ। ठीक है आरजीबी का कनेक्टर जैक नहीं यार अभी लगेगा पावर का कनेक्टर इसमें लगा देता हूँ इसमें है मदरबोर्ड में और इसको चाहिए बन गया। अच्छे से कवर करो। हाँ दूसरा बैटरी चालू। हो गया। ये भी काम कर रहा है। टाइप करो। प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है, देखो
इस तरह से आप मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरा खाली हाथ में काम कर रहा हूँ। तो आप अगर वीडियो देख के कुछ कर रहे हो या फिर बिगिनर्स हो, नया कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली हाथ में ग्लास पहनना चाहिए, हैंड ग्लास होना चाहिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, जाने अनजाने में आप मदरबोर्ड को मतलब डेड भी कर सकते हो या फिर नो डिस्प्ले कंडीशन पे भी जा सकता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप हैंड ग्लव्स पहन के इस तरह का काम किया करें। पर जिसका नॉलेज है वो तो जानता है क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। चलो, जय हिंद।